Forward we have electromagnetic separation. Now electromagnetic separation, from from its word we can derive about things that are gonna be used in this electromagnetic separation. All right. So by the terminology electromagnetic separation, you can derive that the gang particles and ore particles are separated by you know a magnet or electromagnet, right? So by you know seeing its definition, that is electromagnetic separation is based on the separation of magnetic ores from the non-magnetic impurities. Now this is to remember that magnetic ores, now the ores are magnetic here and the impurities are non-magnetic. Impurities mean the gang is non-magnetic, right? And magnetic, what is magnetic? O is magnetic by means of electromagnet or magnetic separation. Now by the means of magnetic or electromagnetic separation. Electromagnetic separation. Separation. Right. So what does happen in this definition? That is, it is based on the separation of magnetic ores from non-magnetic impurities or non-magnetic gang by means of electromagnet or magnetic separators by means of electromagnet or magnetic separator, right? So मतलब कि ये डेफिनेशन में ये बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड होती है सेपरेशन किसके ज़रिए, मैग्नेटिक ओर्स और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ या फिर नॉन मैग्नेटिक गैंग। कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सामने डालते हैं, सो नॉन मैग्नेटिक और अट्रैक्टेड gets attracted towards that magnet and the non-magnet impurities does not get attracted towards it, and hence you get the purified version of that ore, right? So now I'm gonna explain this process to you with the help of diagram. The diagram, you can see diagram here, and this is magnetic separation. Now showing you diagram. Wait. Now in this diagram we have two rulers. One is magnetically charged and another one is non-magnetic. That is the earthly impurities or gang, and that is an ore, right? Now as you can see, when we are throwing crushed ore into this roller, that is attached with leather belt, right? Leather belt is attached with these two rollers, and as soon as we are going to put this crushed ore into this leather belt, so they are gonna roll, and the non-magnetic that is the gang gets falls first. These ores falls first from the non-magnetic gang, and afterwards, because the magnetic ore is attached, and then the magnetic ore is magnetically charged, and its force of attraction is more. That's why it is not just falling first, and then afterwards by weakening its attraction, the magnetic ore is separated. So by keeping in its words, the powdered ore is dropped over a leather bed, as I can show you. This is the powdered ore, crushed ore, or powdered ore, you can say. Crushed ore is dropped on the leather belt, right? And then they're gonna roll. As soon as they're gonna roll, so the non-magnetic,
non-magnetic impurity is gonna fall first, and then magnetic ore is gonna fall afterwards due to the force of attraction. The powdered ore is dropped over a leather belt, right? The powdered ore, as I can show you here, the powdered ore is dropped over a leather belt, moving over two rollers. Now these two rollers means one is non-magnetic and one is magnetic. That is gangue, and the magnetic one is ore and non-magnetic one is gangue, ultimately, right? And one of which is magnetic. That they are talking about magnetic ore. The non-magnetic ore falls first, and the magnetic ore gets attracted and falls afterwards because due to its force of attraction, increased force of attraction, afterwards, and falls further away as shown in figure 16.3. This is a figure, as you can see, 16.3. So the non-magnetic ones falls first. This one, as you can see, this one falls first. The brown one is non-magnetic, so it has no force of such type of force of attraction, so it falls first due to no force of attraction, and then the magnetic one falls afterwards. See, this is a non-magnetic one tank, right? So it falls first, and then magnetic one tank is afterwards, so it falls afterwards due to force of attraction. Moving forward, we have, you can also take the screenshot of the notes, right? Now, coming upon the second sub-SLO of metallurgy, that is extraction of metal and refining of metal. Now, right now we are going to do the extraction of metal from the concentrated ore, right? I've already told you that concentrated ore is the purified ore that is, separated from gangue and, purified form of the ore. So in this process, what happens? The metal is isolated from the concentrated ore by chemical reduction or electrolytic process. So the metal is isolated. That means metal is separated from concentrated ore, right? I'm gonna make some notes here. First of all, metal is separated. Metal is separated from its ore. The second point is it is separated from its ore, right? The third point is metal is isolated from the concentrated ore by chemical reduction, anode and cathode reduction, that one, and chemical reduction and electrolytic process. There are four key terminologies that is to remember: isolated metal, isolation of metal from its ore by chemical reduction or electrolytic process. So what does this extraction of metal from concentrated ore means? It means the metal is isolated from its concentrated ore by chemical reduction or electrolytic process, right? So we have 3 to 4 types of process why we can isolate metal from its ore. 4 process basically, that is 3 process. There are 3 process. First one is roasting. Now by the word roasting, it means heating, Gen Z's roast, that is the exact terminology. Roasting means heating up of metal. Heating up of metal, right? Roasting means heating up of metal. Roasting. It is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in excess air. So, what does
what does happen in this roasting? So what is roasting? Roasting is a process of heating the concentrated ore. As I've already said earlier, roasting is a process of heating the concentrated ore to a high temperature. High because while providing high temperature, you can only get that the molten form of the ore. So roasting is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in the excess of air. But this thing, in the excess of air, you are going to remember, right? So roasting is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in the excess of air, right? Moving forward, we have smelting. Right? भाई तो स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग इज फर्दर हीटिंग, मतलब द सेकेंड वर्जन, द एडवांस वर्जन ऑफ रोस्टिंग, ठीक है. उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि उसमें भी आप हीट कर रहे होगे, ठीक है, लेकिन उसमें आप एक्सटर्नल सोर्स डाल लोगे. एक्सटर्नल सोर्स what does I mean by external source? I mean that by providing sand flux and coke in the presence of air. अब हम लोग कोक इसमें क्यों डाल रहे होंगे? मतलब स्मेल्टिंग प्रोसेस हम लोग कोक की क्या ज़रूरत है? पहले तो आप समझो कोक होती क्या है. वो क्या है? कोल्ड ड्रिंक नहीं है कोई ये. कोक क्या है? कोक एक टाइप ऑफ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वो होती है फेरस सल्फाइड ऑक्साइड से, और ये फेरस सल्फाइड से, और ये मिलती है क्यूपरस ऑक्साइड से, तो ये बनती है कोक बनती है, ठीक है. तो इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसकी ज़रूरत इसलिए होती है स्मेल्टिंग प्रोसेस में ताकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, ठीक है. अगर हमें हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट गिव आउट होती है, अगर वो प्रोसेस बनाना है हमें, इसलिए इसमें कोक की ज़रूरत होगी. और इसमें इसकी सैंड फ्लक्स की ज़रूरत होती है. सैंड फ्लक्स की ज़रूरत क्यों होती है? सैंड फ्लक्स की ज़रूरत इसलिए होती है, हमें वो बनाना होता है, स्लैग बनाना होता है, इसलिए सैंड फ्लक्स की ज़रूरत होती है. अभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे स्मेल्टिंग की डेफिनेशन में पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है. बस रोस्टिंग की एग्जाम्पल आप देख लें. कॉपर पायरेट, ठीक है, CuFeS2 इज स्ट्रॉन्गली हीटेड in excess air and converted into copper sulfide while impurities react with oxygen to form volatile oxides such as this, right? जैसे ही बता रहे हैं वो हीट होगा, ठीक है. उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर फिर वो कन्वर्ट होगा मिक्सचर ऑफ कॉपरस सल्फाइड में और फेरस सल्फाइड में, दो में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है. और उसके बाद इम्प्योरिटीज रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, क्या बनाएंगे? वो वॉलेटाइल ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है. ये पूरा हमें केमिकल इक्वेशन इसमें दी हुई. स्मेल्टिंग में बात है. स्मेल्टिंग इज़ अ फर्दर हीटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर, जो हमने रोस्टेड ओर यहाँ पूरी की थी, ठीक है, उसकी हीट, उसको और हीट करते हैं. कैसे? सैंड फ्लक्स डाल के और कोक डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एक्सेस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इन ए ब्लास्ट फर्नेस एज शोन इन फिगर 16.4. मतलब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का नाम ही क्यों ले रहे हैं? ब्लास्ट फर्नेस होती क्या है और इसकी ज़रूरत स्मेल्टिंग में क्या होती है? हम नॉर्मल कंटेनर ये क्यों नहीं ले सकते? अब ब्लास्ट फर्नेस की ज़रूरत देखें आप. ब्लास्ट फर्नेस ऐसी ज़रूरी होती है क्योंकि जो हमने स्पेसिफिक जो हम लोग प्रोसेस करवा रहे हैं इसलिए ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने इसमें कोक डाली है, ठीक है. अब कोक हाईली रिएक्टिव होती है और ब्लास्ट फर्नेस इतना मतलब टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इतनी कैपेसिटी होती है उसकी रेजिस्टेंस की कि वो उसको मतलब रेजिस्ट कर सके कोक को, ठीक है. इसलिए हम लोग ने ब्लास्ट फर्नेस यूज़ किया है इसमें. तो हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी. डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ अ फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर विथ सैंड फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द ब्लास्ट फर्नेस. मतलब 3 से 4 पॉइंट है इसमें. 3 से 4 पॉइंट क्या है? पहले तो फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर है, ठीक है, रोस्टेड ओर की फर्दर हीटिंग है, पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि विद किसके साथ हम लोग हीट करवा रहे हैं? उसको सैंड फ्लक्स के साथ हीट करवा रहे हैं, ठीक है. और तीसरा पॉइंट है हमारे पास सैंड फ्लक्स के साथ और कोक के साथ हीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ. चौथा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एयर. अब पांचवा पॉइंट है जो आपको कभी नहीं भूलना, वो ये है ब्लास्ट
फर्नेस हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इट इज़ द फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर विथ स्टैंड प्लग्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, और इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ये हमारा हो गया। आपको लिखना है तो लिख लें। आई एम गोइंग टू मूव इन कपल ऑफ सेकेंड्स, जस्ट शोइंग यू, ठीक है। चलो अब इसमें यही इसमें फ्यूरियस सल्फाइड ऑक्साइड बताई हुई है जो कि ऑक्सीडाइज होगी, उसके बाद क्या बनेगी, फ्यूरियस ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं कि इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें हमें बहुत सारी हीट चाहिए होती है और कोक बहुत ज़्यादा मतलब हीट वो करता है, इमिट करता है, और उसके पास हीट बहुत होती है, तो इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इस कोक को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अपनी डेफिनेशन बता देते हैं। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट फ्यूरियस सल्फाइड ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फ्यूरियस ऑक्साइड। फ्यूरियस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है, फ्यूरियस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और जो सल्फाइड बचेगा, सल्फाइड क्या होगा, विच रिएक्ट्स विद सैंड। फ्यूरियस ऑक्साइड जब कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ फ्यूरियस सल्फाइड है, जो ऑक्साइड होता है, वो फिर रिएक्ट करेगा सैंड के साथ। अब सैंड के साथ रिएक्ट करने के बाद स्लैग बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्लैग बनाएगा, आयरन का स्लैग बनाएगा, आयरन सिलिकेट स्लैग बनाएगा सैंड के साथ जब फ्यूरियस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा। इसका केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल इक्वेशन ये होगी FeSi0O3। ऑक्सीजन हो गया, सिलिकेट हो गया, और आयरन हो गया Fe। इट बीइंग लाइटर राइजेस टू द टॉप एंड इज़ रिमूव फ्रॉम द अपर होल। अब वो लाइटर इन वेट होगा, डेंस कम होगा, तो फिर राइज होगा वो, ठीक है, टॉप मतलब ये इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अपर होल से निकलेगा। तो फ्यूरियस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ, फिर वो रिएक्ट किया उसने सैंड से, फिर स्लैग बनाया, आयरन सिलिकेट स्लैग बनाया, फिर वो निकल गया, समझ, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि एक और गैस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था रोस्टिंग में कि दो गैसेज यूज़ होती हैं, ठीक है। इसमें पहली गैस हमारी फ्यूरियस सल्फाइड ऑक्साइड, सॉरी फ्यूरियस सल्फाइड यूज़ हुई थी, फिर ऑक्साइड हुई थी, ऑक्सीडाइज होने के बाद फ्यूरियस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, उसने सैंड के साथ रिएक्ट किया, आयरन सिलिकेट स्लैग बनाया, ठीक है ना। जब आयरन सिलिकेट स्लैग बनाया तो फिर उसने वो राइज हुआ टॉप पे, और फिर ड्यू टू लेस डेंसिटी राइज हुआ निकल गया, ठीक है बाहर। उसके बाद ऑन द अदर हैंड क्यूपरियस सल्फाइड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस, ठीक है। अब क्यूपरियस सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है फ़ौरन से। क्यूपरियस सल्फाइड होता क्या है, क्यूपरियस सल्फाइड भी एक टाइप ऑफ गैस है जो कि प्रोसेस में यूज़ होती है, स्मेल्टिंग में। अब क्यों यूज़ होती है, क्योंकि जब वो ऑक्सीडाइज होगी क्यूपरियस सल्फाइड, तो फिर वो बनाएगी क्यूपरियस ऑक्साइड, ठीक है, जो रिएक्ट करेगी अनरिएक्टेड फ्यूरियस सल्फाइड, मतलब जो हमारा बचा था ना यहाँ फ्यूरियस सल्फाइड, थोड़ा सा जो ऑक्सीडाइज होने से पहले जो बचा था, वो यहाँ रिएक्ट करेगा कॉपरस ऑक्साइड से, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑक्साइड होगी कॉपरस सल्फाइड, वो रिएक्ट करेगा फ्यूरियस सल्फाइड से, और क्या बनाएगा, फ्यूरियस ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। फ्यूरियस ऑक्साइड